Hello everyone, my name is Shankar. Today's video is about how we can find the job opportunities using cold emails. Yes, this is one of the best way of finding your dream job that often works because you are sending some personalized emails that hits like a bullet to the bull, and this trick will definitely help every job seekers if you want any kind of job opportunity which you are not able to get because you are applying and you are not getting any response from HR, or you are not getting any kind of interview call. Then using this cold emailing process is always the great thing that you can do to find your great job. So let's go ahead. I'll share my screen. I have created one PPT. This is the process that can help you understand what a good process will look like for finding a great job through cold emailing. So let's go ahead. Perfect. So this is the first slide which you can see, which says the power of cold emailing for job opportunities, right? Cold emailing is a powerful tool that can uncover a lot of opportunities that you might not see on LinkedIn or Naukri or any other job portal. This is always true that whenever you are trying to find a great job, a job market is like an iceberg, which is some feet above the sea and very deeper to the sea level, which you can't see through job postings and any job साइट। जनरली जितने भी ऐसे जॉब्स होते हैं मार्केट में जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं या फिर हाई पेइंग जॉब्स होते हैं या फिर जो क्रिटिकल रोल्स होते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा जॉब सर्च या फिर जॉब पोस्टिंग्स कंपनीज प्रेफर नहीं करती हैं। वो प्रेफर करती हैं कि उन जॉब्स को वो वैसे कैंडिडेट्स को खुद से ढूंढे, सर्च करें, और वो जॉब पोस्ट नहीं जाती हैं। दूसरा, हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको जॉब चाहिए होगा एंड द कंपनीज विल डू अ जॉब पोस्टिंग। So that's a base practice that even if company is not hiring and you use some cold emailing, you present yourself in a such a way that companies are getting attracted towards your skills, still you will have a high chance that you can get a job even if there is no job opportunity, because any company would always love to have the best folks in their organization even if they are not hiring for it, right? So that's the first slide, which is potentially will tell you that why you should try a cold email for your job. Let's go ahead to the method of how a cold emailing process will look like. Okay, so what is the best practice? So first, as you can see, I had mentioned hook them initially, as in as a टॉपिक यूज करना है आपको, या फिर यू हैव टू यूज समथिंग पर्सनलाइज सब्जेक्ट लाइन दैट कैन that can compel people to open their email. Generally, like HR, रिक्रूटर, कंपनीज के पास बहुत ज्यादा ईमेल्स आते हैं, मे बी 100-200 ईमेल्स, बट वो सारे ईमेल्स इतने जेनरिक होते हैं, उनके सब्जेक्ट लाइन इतने जेनरिक होते हैं that people do not open those emails. But now if you want that HR or recruiter or company owner or anyone will open your email, in that case you will have to write something which is very catching, personalized email subject line that people cannot ignore it. Like this, NASA founded Vikram lander, we founded you. This was the one of the catchy subject line I used 4 years or 5 years back. Something like this, a 90 kids who believes in hard work plus a smart work, right? You're looking for a candidate which is not in your database, or I mean something which can really create a value for your emails, right? Once your email is open, then you can share your potential opportunities, share your potential skills to the interviewer, right? Email आपका हमेशा बहुत concise होना चाहिए. You don't have to write a lot of a story in the email, right? You have written about your achievements, you have written about your academics, family background, nothing. Just write 5 or 7 words that can really help to create a curiosity in the interviewer or the HR, so that they will come back to you and they will respond to your email and they will try to set up a call to learn more about you, right? Always highlight your values as in emphasize how your email can benefit recipients, such as by offering the unique solutions or insights. Okay, जैसे आपने किसी कंपनी को, स्टार्टअप को बिल्ड किया, राइट? आपने उस कंपनी के जर्नी में बहुत हेल्प की कंपनी को ग्रो करने के लिए, या फिर आप यू आर द फर्स्ट पर्सन और द फर्स्ट सेल्स पर्सन in the first company, and you did help those company grow their revenue from zero to, let's say, $1 million or something like this, which will catch the attention of the HR, that you are the one person who have done some kind of magical work in the past. You are not some ordinary person who is just writing an email for a job, right? So this is the first basic things. Use a catchy subject line. You can use some kind of chat GPT, or you can use Gemini or any kind of AI, or even you can Google for a lot of good subject lines that you can find on internet. Second, always keep a 3 or 4 liners emails. And the best practice is you create some small video using Loom or any kind of video platform and attach the link in the email, that along with the content, someone can also see your video, your appearance, your communication skills. Still, it should be a 60 or 90 second kind of video, the way you create Instagram reels or YouTube short videos. Third is that you always
keep very highlighted value that you have or you can offer to the organization that can really solve some great problem of those organizations, right? For an example, you saw this company is a marketing company. They are trying to do some kind of good ads, and they have not done any creative or viral ad so far. And you set some example that in your previous organization you were able to create this kind of viral ads or ad copy which did help those companies generating 1,000 or 10,000 leads in 2 or 3 days, something like this, which can create value for yourself. Okay, next is as I mentioned, using video is the best practice, because when someone is seeing your emails, there are high chances that they will be able to remember you. But if you are able to present yourself through videos, generally videos are something that can always create a hook in the viewer's mind, and they will always remember you, right? And अगर अगली बार अगर आप फॉलो भी लोगे तो भी वो आपको याद रखेंगे. So small video of 90 second, 60 second or something that can really help you personalize your pitch the way you have seen in Shark Tank, or how we can create a stronger pitch that you can do in a video. You can use your expertise, you can tell about your expertise, that whatever the things you have done, the value that you can bring on the table, and build some kind of rapport with your HR or the receiver, that how that person will be able to help you in the future. Or you should create some kind of personal branding or personal relation with the reader or viewer, so that they remember you, right? Creating viral gold emails for job searches, like these are the four frame you see: captivating content, shareable elements, memorable branding, and call to action, right? I'll explain you what it is. So captivating content is the one thing where you write a very compelling and narrative that resonates the recipient, highlighting your unique value proposition, which means आपने कुछ ऐसा लिखा जो आपका रीडर वेट कर रहा था, वैसे सॉल्यूशंस को ढूंढ रहा था, और उससे ऐसा लगे कि यस, दिस इज द वन थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर, और उसके जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो इंक्रीज हो जाए आपके ईमेल के पढ़ने के बाद. सेकंड क्या होता है, शेयरेबल एलिमेंट्स क्रिएट करना चाहिए. जैसे कि अगर वो आपने कुछ लिंक दिया, कुछ प्रेजेंटेशन दिया, वो अपने और कलीग्स और अपने बाकी के डिपार्टमेंट्स हेड्स, फंक्शनल्स मैनेजर के साथ शेयर कर पाए उनके इनपुट्स को क्रिएट करने के लिए. या फिर कुछ वैसे आप स्टैटिक्स यूज करो, विजुअल कुछ नंबर्स यूज करो, जो सामने वाले को देख के मजा आए, उसको लगे कि हाँ, इसने कुछ सॉलिड क्रिएट किया हुआ है, प्लस दूसरी ओपिनियन लेने के लिए उस चीजों को वो बाकी मार्केट में भी लोगों के साथ शेयर कर पाए, ताकि उसको पता चले कि अगर अगर मुझे ये कैंडिडेट सही लग रहा है एंड आई वांट कि मेरे कलीग ABC भी इसको देखें, तो वो पॉसिबल हो सके. ठीक है, ब्रांडिंग यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ब्रांडिंग यूज नहीं की है ईमेल में, तो आप भी उसी भीड़ की तरह हो जाओगे जैसे हर कोई होता है. आप अपनी एक अलग यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाओगे ईमेल पे, एंड उस केस में क्या होगा कि आप लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन नहीं छोड़ पाओगे अपने रीडर्स पे या फिर व्यूअर्स पे. सो इसलिए पर्सनल और मेमोरेबल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट होता है. फोर होता है कॉल टू एक्शन, राइट? कॉल टू एक्शन क्या होता है कि आपने उसको बोला कि ठीक है, आगे जानने के लिए इस ईमेल पर रिस्पॉन्ड करें, या फिर आपने अपने व्हाट्सएप का एक लिंक क्रिएट करके दे दिया, यू वांट टू चैट मोर, क्लिक हियर. या फिर आपने कुछ भी ऐसा कॉल टू एक्शन क्रिएट किया जहां से रिव्यूअर को ये मैसेज मिले कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए. ठीक है, तो कॉल टू एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंड इज हाईलाइटिंग द की पॉइंट्स टू ग्रैब अटेंशन. लाइक जब भी आप किसी ईमेल को बहुत पावरफुल बनाने की कोशिश करते हो, देन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज आइडेंटिफाई द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स दैट विल रेजोनेट विद द recipient and they emphasize them clearly. Second is concise messaging. Use succinct, impactful language to convey your key points in a way that easy to digest. आप कुछ वैसा मत लिख दो कि सामने वाले को डाइजेस्ट ही ना हो, कि आपने कुछ वैसा कर दिया जो people will not be able to believe it. Keep it always something which is real, which is realistic, and people will be able to believe that yes, this is doable, or maybe this is doable, but this is ambitious, right? Attention grabbing, always write something that can steal the attention of your viewers and your readers, and your email should not go like a blank page or so. Now showcasing impactful examples for aspirations, सक्सेसफुल कैंपेन, एंगेजिंग फॉर्मेट एंड परसुएसिव मैसेजिंग. ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप कोल्ड ईमेल को चाहती हो कि वो इतना पावरफुल हो कि सामने वाला आपका ईमेल पढ़ने के बाद आपको रिस्पॉन्ड जरूर करे. ठीक है, रियल वर्ड से आप सीख सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं मार्केट में. आपने काफी सारे ऐसे एड्स देखे होंगे क्रिएटिव, जो आपको लगता है कि वाह, ये तो नया है कुछ, एंड आपको मजा आता है वो एड्स देखने के बाद, राइट? एंगेजिंग फॉर्मेट यूज करो आप.
जिससे लगे कि एक अच्छा सा इंप्रेशन क्रिएट हो आपके रीडर्स के बीच में, और वो ये ना सोचे कि अच्छा ये तो बहुत प्लेन ब्लैंक सा ईमेल क्रिएट करके मुझे भेज दिया है। फॉर्मेटिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, आपने कहाँ कहाँ पे डॉट कॉमा और क्या लाइन कहाँ पे यूज करी है, कौन सी लाइन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है उस लाइन को आप ऊपर रखो, जिस लाइन का इंपॉर्टेंस कम है उस लाइन को आप नीचे रखो। और परसुएसिव मैसेज होना चाहिए, राइट। लैंग्वेज आप देखो कि लैंग्वेज आपने बहुत ज्यादा फैंसी तो नहीं क्रिएट कर दिया, आपने बहुत ज्यादा जॉर्गन्स तो यूज नहीं कर लिया, जबकि सामने वाले को आपका लैंग्वेज और वो जॉर्गन से समझ में नहीं आ रहा है, और सामने वाला आपके ईमेल से रिलेट नहीं कर पा रहा है। प्रेजेंटेशंस को ऐसा बनाओ कि सामने वाला उसको रिफ्यूज ना कर पाए, राइट। सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपने देखा कि आपको कंपनी है, लेट्स से गूगल, आपने न्यूज में पढ़ा कि गूगल इज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस टू देयर सिक्योरिटी अबाउट क्रोम ब्राउजर। अगर आपको लगता है कि आप उसके रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ बना सकते हो, या फिर आपके पास आइडिया भी है, तो उस आइडिया को आप प्रेजेंट करो अपने ईमेल में, ताकि उनको लगे कि आपने बस ऐसे ही कुछ सोच करके ईमेल नहीं भेजा है, बट आपने प्रॉपर रिसर्च करी है और आपने उस सॉल्यूशन के बारे में लिखा है जिस सॉल्यूशंस का गूगल क्रोम की टीम को इंतजार है। एंड देन उनको लगेगा कि यू आर द वन हु इज सीरियस, you are the one who is a mature person, and definitely they will respond, and they will be curious to learn about whatever solution you are presenting to them. Even you can just create 2 or 3 slides of ideas that how you can solve that problem of Google Chrome security. So this is the one best thing that I have seen ever working for any job seekers, right? Now this is the last one: research, prepare, craft compelling email, follow up, and engage. And always try to follow up with your HR or the person to whom you have sent the email. And follow up भी आपका बहुत बोरिंग नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ऐसा ऐसा follow up यूज किया कि हाय, आई एम जस्ट चेकिंग इफ यू हैड अ चांस टू गो थ्रू माय प्रीवियस ईमेल और नॉट, राइट, समथिंग लाइक दिस, हे आई थॉट यू वुड लाइक दिस। एंड बस इतना लिखने के बाद सब्जेक्ट लाइन उसमें ईमेल पे लिखो कि हाय, आई अंडरस्टैंड यू आर बिजी बट आई थॉट I can add more information about myself that can really help you understand my interest and my ambitions about your organization and this job. अगर उसके बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं आता है, अगेन आप सेकंड फॉलोअप ईमेल डाल सकते हो, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, लाइक दिस, एंड देन यू कैन राइट अनदर वेरी 2 or 3 लाइनर्स काइंड ऑफ थिंग्स। अगर फिर भी ईमेल ना आए तो ऐसा लगता है कि अब तो ईमेल का रिस्पॉन्स आने से रहा, तो लास्ट में आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो कि पर्सनलाइज करें फर्स्ट नेम ऑफ जिनको भी आपने ईमेल भेजा, लेट्स से राजेश, राजेश गुड बाय, दिस इज माय लास्ट ईमेल, ऐसा कुछ करके जहाँ पे लगे सामने वाले को कि अच्छा, this person is now you know is going to stop the follow up, and definitely that person will be in courtesy and they will try to give you some kind of response, even अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं भी है तो आपको ना या हाँ तो जरूर बोल देंगे। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको ट्राई करना चाहिए कोल्ड ईमेलिंग का। बाकी ये लिंक प्रेजेंटेशन की मेरे यूट्यूब वीडियो लिंक में है, आप ये लिंक देख सकते हैं, और मैंने कुछ वैसे भी लिंक ऐड की है जहाँ से आप कुछ सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो कैची, और क्या क्या इनसाइट ऐड करना चाहिए। और बाकी ऐसा कुछ अगर आपको आगे भी चाहिए तो आप मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।